Good evening and welcome. Welcome to Divine Healing Valley Spirituality and Healing Meet, and it is our regular Wednesday meeting that we are here for. I am Shashi Dhar, your host, and I welcome all the guests and all the regular participants here for our weekly satsang. Yes, that's what I call. This is our weekly satsang. We are actually on a journey of going through the spiritual laws. So, based on Deepak Chopra's book, 7 Spiritual Laws of Success, we are having discussions and sharing our insights on the various spiritual laws. We have already covered 3 major spiritual laws, which is the law of pure potentiality, number 1. It is also called the law of being. Second, the law of giving. We can also say that law of giving and receiving. And third is law of cause and effect, which is law of karma. In that law of karma, we did that in 2 sessions so that we can get a better understanding, because it is applicable in every aspect of our life, right? And today we are moving on to the 4th law, the law of least effort. So, what comes to your mind when you hear this? Obviously, it is a universal law. It is a spiritual law which is always applicable to everyone. So, we can't say it is not applicable to me or it is only applicable to me, not for others. No, it is applicable for everybody, for all the human beings, and it is a spiritual law. So, let us understand this. And the purpose of this series of universal laws is we can get our understanding and our beliefs as close to the universal law. And once we are aligned with the universal laws, then we can say that yes, our understanding is improving and moving towards the highest level. Correct? So we can look for the spiritual truth. Our understanding and beliefs are based on that universal truth. So it gives us better clarity of life, and it gives us better perspective of where we are heading in our spiritual journey. So that is the whole purpose of this whole series of spiritual laws. And with this context, we will look at the law of least effort. Now, when we hear law of least effort, what comes to our mind? Least effort से क्या समझ में आता है? कहीं कोई काम तो करना है, कर्म तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन कहीं कोई स्ट्रगल नहीं है, कहीं कोई क्या बोलेंगे डिसकंटेंट नहीं है. When you are happy doing whatever you are doing, there is no stress, correct? There is no effort. It actually flows. So जब हमारे effort ऐसे हैं, when it's really like, you know, we are very passionate, very happy about what we are doing, तो उसमें कोई effort नहीं लगता है, right? So that is the actual meaning of law of least effort. So number one, you can categorize when you are passionate about something, when you are happy doing something, there is no effort. It is least effort, correct? Action रहेगा, हाँ, don't get me wrong, action रहेगा, लेकिन effort नहीं होगा, least effort होगा. इसको हिंदी में बोलते हैं, या उसमें एक टेक्निकल वर्ड है, बट इट इज वेरी पावरफुल वर्ड, अनायास बोलते हैं, अनायास, विदाउट मच एफर्ट, ज्यादा प्रयास के बिना, स्मूथ फ्लो. इट इज लाइक fishes swim in the water. That is your life. Birds fly in the sky. That's your life, right? तो उसमें कोई effort नहीं है. That is the way of their living. So similarly, when a human being makes he is doing some action and is very passionate, very happy about it, there is no effort. You can say least effort. अनायास, बिना किसी ज्यादा मेहनत के, बहुत ही आसानी से, रादर effortless, आसानी से आप काम कर रहे हैं, right? Which means you can also understand it this way: you are flowing with the river. You are not swimming against the flow of the river, you are flowing with the river. So it is easy, right? That is what the law of least effort says, correct? And when we are not following these law, what happens? There is stress, there is struggle, there is tension, there is hostility, there is conflict. Yes, everybody can connect with this.
welcome. Let me welcome the guests who have just joined in. So Dolly Joshi Tijoriwala, yes, very good. So Nivedita ji, yes, Namaste, sir. Namaste. namaskar, Yeah. welcome. And Thank you, Leslie, sir. of Thank you. course, our friend Leslie is here, so Very- good. Yes, so based on our understanding of law of least effort, which I have tried to explain in the very simple words, what is your understanding now? What are actions you are doing in your life? जो भी आप लाइफ में काम कर रहे हैं, चाहे प्रोफेशनल, चाहे आपकी हॉबी, चाहे अभी जैसे शालू जी ने शेयर किया कि वो अभी स्पिरिचुअल टूर पे गई थी कहीं पे, एंड शी वेंट देयर एंड शी वेंट एब्सोल्युटली ब्लिसफुल एक्सपीरियंस. अगर नहीं देख रहा तो इसमें घुसा हुआ डू है, यू थिंक इट फालतू वाज के एन लिए नहीं एफर्ट? खुला हुआ. उनको एफर्ट लगा होगा. इफ द रिजल्ट इज ब्लिसफुल, डू यू थिंक इट विल बी एन एफर्ट? No way, it is effortless, right? You love it, you can go there again. It is like Sachin Tendulkar playing cricket. It is effortless for him. बाकी लोगों को लगेगा अरे यार 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल आ रही है, बाउंसर मुंह पे आ रही है, सर पे आ रही है, तो बॉल दिख भी नहीं रही है. इट इज अ ह्यूज टास्क, बट फॉर हिम effortless. He will hook it, he will play cover drive, whatever he has to do he will do, and but it is effortless, right? Get my point? So look into our life. Let's look into our life and see कहाँ पे हमारे एक्शंस में एफर्ट आ रहा है, स्ट्रगल आ रही है, और कहाँ पे हम बिल्कुल एफर्टलेस हैं, जहाँ फुल पैशन के साथ, फुल हैप्पीनेस के साथ हम कर्म कर रहे हैं. कर्म करना है, कर्म तो होगा ही होगा, बिना कर्म के तो हम रह ही नहीं सकते. व्हेन ए सोल इज इन अ ह्यूमन बॉडी, कर्म तो होना ही है. अब वो कर्म हम कैसे कर रहे हैं? दैट इज इट. अनायास कर रहे हैं या बहुत कठिन प्रयास के साथ कर रहे हैं? बहुत स्ट्रगल है. Are we swimming downstream or are we swimming upstream? So let us look into our life and see what kind of actions are we involved in. Let us take one day of 24 hours. कईयों को तो सोने में भी स्ट्रगल है, नींद नहीं आ रही, स्लीपिंग पिल्स खानी पड़ रही हैं, तो क्या वहां पे भी सोने में भी एफर्ट है? और कोई है बैठे बैठे खड़े खड़े सो जाते हैं और फिर 8 घंटे कहाँ गए पता नहीं, घोड़े बेच के सोते हैं, एंड फिर दैट इज एफर्टलेस, राइट? यू क्रैश, आंखें बंद, 1 सेकंड में सो गए, 1 मिनट में, चलो 1 सेकंड नहीं, 1 मिनट में सो गए. Perfect. So now you know what I mean by law of least effort. Let's have some sharings so that we can take that understanding into our life. कौन शेयर करना चाहेंगे? लेस्ली, निवेदिता जी, विजय जी. यस, सर, हाँ जी, बताइए. दिस इज समथिंग, जैसे आपने बोला ना, तो माय अंडरस्टैंडिंग इज लाइक, अगर रिलेशंस में भी या तो देखें तो जो those who are very close to you, and to them you are very open and very, like, clear and everything. So तो वहाँ जरूरत ही नहीं है, एफर्टलेस, लाइक, एंड देर आर सर्टन रिलेशंस, कहीं किसी को क्या बुरा लग जाएगा, कैसा है, लाइक, सो देर क्या बोलेंगे, कैसा, लाइक, लॉट ऑफ I get स्ट्रेस my बोलने point. से पहले भी. या Absolutely. I can fully हाँ. connect with what Nivedita ji is saying. जब हमारे क्लोज या बडी हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं, उनके साथ हमको परवाह ही नहीं होती हम क्या बोल रहे हैं. गलत बोल दिया, सही बोल दिया, जैसे मर्जी बोल दिया, we know that that person is not going to feel bad, and I'm in a very हाँ. comfortable place. I can say my heart out. So या that is right. वेरी All of us have some मच. people like that. Yes, where we are absolutely bindas, मस्त, कोई परवाह नहीं क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कह रहे. तो इस तरीके का एक स्पेस हमको मिलता है किसी के साथ, तो बहुत बढ़िया. रिलेशनशिप में अगर ऐसी स्पेस मिल रही है, देन यू नो दैट यू आर इन द एब्सोल्युटली फ्री जोन, लीस्ट एफर्ट, एकदम मस्त बिंदास, आपको कोई परवाह नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं. ग्रेट. एंड सम पीपल, या टू वेरी वेरी केयरफुल, कब बुरा मान जाए, एक एक वर्ड नाप तोल के बोलना. यू बिकम वेरी कॉन्शियस ऑफ व्हाट यू आर सेइंग. It could be, when you're giving a speech, or even when you're doing a session like this, sometimes you have to be very careful what kind of a terms you are using, and what kind of just like on a public forum, wherever, so you have to be careful. Yes, I get that point. इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? लीस्ट एफर्ट तो है, लेकिन इसको अगर प्रैक्टिस में लाना है तो ये कहाँ पे आएगा? कौन सी ऐसी प्रैक्टिस है जिससे हम इस स्पेस को एक्सेस कर सकते हैं?
what are you experiencing when you are absolutely free about what all your actions? जब हम अपने एक्शंस में बिल्कुल फ्री हो जाते हैं तो कौन सी स्पेस हमको मिल रही है? मेरे ख्याल शशिधर जी एक्सेप्टेंस एंड ग्रेटिट्यूड वेरी गुड विजय जी. Acceptance. We are getting unconditional acceptance from our friend. That's why we are absolutely binda. हमको कोई परवाह नहीं है अब. Correct? तो अपने बड़ी फ्रेंड्स हैं, अपने क्लोज फ्रेंड्स हैं, so you can connect with that. And sometimes even with some relatives, you are very close, so you can share whatever you want. Right? Very good. So the point is, law of least effort का पहला point है acceptance. Let us look into this into more details. Yes. In fact, Deepak Chopra has outlined 4 steps, and the first step is acceptance. Yes. So let us look into the details of this acceptance. Acceptance का मतलब क्या हुआ? What are we accepting? अब हम उनकी बात नहीं करें, हम अपनी बात कर रहे हैं. उन्होंने हमको कंडीशनल अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस दिया, तो वी आर एब्सोल्युटली फ्री. तो व्हेन वी आर अनकंडीशनली एक्सेप्टिंग, किसको एक्सेप्ट करेंगे हम? लोगों को अपनी लाइफ में, so that we give them that space. Correct? और सबसे और पहले तो किसको? सर अपने आप को एक्सेप्ट करने का विद आवर Okay, very good. flaws and We have, every human being has some flaws and some strengths, so we accept ourselves with our flaws and our strengths, and we work on our strengths, and we manage or improve on our weakness slowly, step by step. Very good. So first acceptance is we accept ourselves, then we accept all the people in our life. Correct? So that we give them that space जो हमको एक्सपीरियंस हुआ था पहले, जो अभी निवेदिता जी ने बोला था. करेक्ट? और क्या एक्सेप्ट करना चाहिए हमको? व्यक्ति वस्तु परिस्थिति तीनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. आज विजय जी तो बिल्कुल सिक्सर्स मार रहे हैं. अमित आया हुआ है ना, अमित के सामने थोड़ा बोलना पड़ेगा क्या? जस्ट राइट. यस. तो बाहर की दुनिया को अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं द वे दे आर एंड द वे दे आर नॉट, so it would include people, it will include situations, it will include things. करेक्ट? अब आप चाहेंगे कि आपकी हाइट अमिताभ बच्चन जैसी हो, नहीं है भाई, मैं 5 फुट 6 इंच हूँ, एक्सेप्ट इट. करेक्ट? आई विश आई कुड बी ए रोबोकॉप और ए स्पाइडरमैन और ए सुपरमैन फ्लाइंग अराउंड, with supernatural powers. Relax. Accept yourself the way you are and the way you are not. You're an ordinary human being. Yes, you have some strengths. Work on that strengths. You can become a supernatural, or we can become a supernatural powers in whatever we are doing. अगर कोई डॉक्टर है तो वो डिवाइन एफर्ट्स के साथ सर्जरी कर सकता है. अगर कोई हीलर है तो वो डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ मैजिकल हीलिंग्स कर सकता है. Get my point? So you can excel in your area of expertise. Yes, we can do that. But then first you need to accept your strengths, accept your weaknesses, and accept the people and the situations the way they are and the way they are not. That's important. We accept, normally हम accept क्या करते हैं? The way they are. But we don't accept them the way they are not. Acceptance का मतलब ही यही है, वो जैसे हैं और जैसे नहीं हैं, they are fine, they are perfect, they are part of our life and we accept them. Correct? But अक्सर होता क्या है, हम theoretically तो ये जानते हैं, लेकिन आमने सामने जब आते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है तो प्लीज गो ऑन म्यूट. यू कैन अनम्यूट व्हेन यू वांट टू शेयर. यस. आमने सामने आते हैं तो क्या होता है? तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है. हाउ कैन माई सन रिटॉर्ट टू मी लाइक दैट इन फ्रंट ऑफ, है ना, 5 लोगों के सामने आपके बेटे ने आपको कुछ उल्टा जवाब दे दिया. हाउ कैन यू डू दैट? हाउ कैन माई सन स्पीक ए लाई? ही इज अ ह्यूमन बीइंग बॉस. गिव हिम सम लिबर्टी. वो इंसान है, झूठ बोल सकता है. राइट? एज ए चाइल्ड वी नो वी यूज्ड टू टेल लाइज. यस. पनिशमेंट से बचने के लिए हर एक का डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? या तो झूठ बोलेंगे, चीटिंग करेंगे, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने थोड़ी सी चीटिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा झूठ बोल लेते हैं, तो ये पैसे भी चुरा लेते हैं. राइट? पकड़े गए तो मार भी पड़ती है, अलग बात है. बट देन वी ऑल हैव डन दैट. सो इफ योर सन डज इट,
It's okay. Yeah, we have to give him values, but first accept that it is okay if something has happened, because it has already happened. अब okay ना होके कोई फायदा नहीं है, जो होना था हो चुका है. Accept it. So accept the past, take proactive actions in the present, and then create a wonderful future for yourself. That's how we move on, right? तो past के साथ struggle नहीं करना है. Past is over. उसको accept कर लो. अच्छा हुआ बुरा हुआ अलग बात है, वो सब हमारे interpretations हैं of what happened. But what happened is already happened. Acceptance. Clear है? Acceptance clear हुआ? Anybody who wants to share something on that? If you have any questions, if you need any clarity. तो मेरा ख्याल शशिधर जी, once you accept yourself with your problems and your flaws and your defects, you realize that everybody is in the same boat. So acceptance दूसरे का भी easily हो जाता है. Very good. अपने And को once accept कर that लेंगे. happens, then there's no conflict. Absolutely right. Very good. So when we accept ourselves, rather I will add a few more things. When we respect ourselves, when we can forgive ourselves, we will be able to accept, respect, and forgive other people in our life very easily. Correct? So that is the first step. That is the actual meaning of acceptance. Everybody clear? Leslie, anything you want to add? Align? Okay, good. Shalu ji, and let me welcome Sushil Jain ji, Rahil ji, and Devesh ji. Yes. So we are talking of. Yes, go ahead. No, you asked me something. Are you aligned? I said, yeah. Whatever you do to yourself, you do to the others. Whatever you do to the others, you do to yourself. It's the same. Absolutely. Actually, we can take it further and say that actually whatever you're doing for others is there, since they are an extension, you are only doing that to yourself. So that is another way to understand that. So that is well taken. But right now for this discussion, we will keep ourselves and others separate. So first I need to love myself, accept myself, forgive myself, and then I will be able to love, accept, and forgive others. So acceptance clear ho gaya? Everybody clear on this acceptance? Very good. The second step for law of least effort is responsibility. What Deepak Chopra says is responsibility. So responsibility kya hai? How do you explain responsibility for to be aligned with the law of least effort? How would we do that? Responsibility की definition क्या है? अगर कोई एक definition देना चाहे. Anybody? Responsibility means to take ownership. Very good. Huh? To take ownership of everything in my life, like that. Ji. Very good, Amit ji. Let's acknowledge Amit ji. So responsibility को अगर हम थोड़ा सा break कर दें, it is responsibility. Ability to choose your response. You can understand that is one definition. Life situation है मेरे सामने, अब मैं कौन सा response choose करूंगा? This is responsibility. But on a deeper sense, you can say that I am responsible for everything that is happening in my life. Like I am the cause and the matter. मेरी लाइफ में जो कुछ हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है. Others are just playing a role. Whether they are like in a movie, a hero के साथ कौन कौन होते हैं? साइड हीरो होता है, विलन होते हैं, करेक्ट? एक कॉमेडियन फ्रेंड भी होगा. ये सब रोल्स हैं, बाकी सब रोल्स प्ले कर रहे हैं, so that I can play the role of a hero perfectly. So who is responsible for the whole movie being a super hit? The hero is responsible for his actions and for the whole movie to become a golden jubilee super hit movie, blockbuster. Correct? If you want your life to be a blockbuster, you have to be responsible. So I have to be responsible for making my life golden jubilee blockbuster. Yes, others will play their role. वो आएंगे, अपना रोल प्ले करेंगे, चले जाएंगे. क्लियर है? तो दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी.
ability to choose my response, number one. Number two, I am responsible for whatever good or bad, good, bad and ugly that is happening in my life. Yes, Nivedita ji, go ahead. सर इट इज वेरी मतलब बोल देते हैं एक्सेप्टेंस, बट लाइक व्हेन सम पीपल दे डोंट टॉक नाइसली टू यू, और मतलब व्हेन यू आर वेरी हैप्पी गो लकी विद देम, एंड देन आल्सो दे ट्राई टू बॉस ओवर, एंड कभी कभी होता है ना सर, कोई किसी को होता है कि लाइक तो जो अनकंफर्टेबल वाले जोन वाले लोग हैं, तो वो भी उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ही है सर। वी हैव चोजन देम, ऐसा है क्या? वी हैव चोजन देम टू एक्ट लाइक दैट, ऐसा है सर? See, look at it in that way. Very good question, by the way. Dolly ji का question बहुत अच्छा है. Let's acknowledge her. Because very tough situation when somebody, you are good to somebody and they behave like a dash dash dash, right? So दे no, टेक no, यू फॉर ग्रांटेड काइंड ऑफ, कि इसको तो कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा। yeah, they treat you like a doormat or they treat you like a boxing punching bag. आके कभी भी उका मार दो, कभी भी फुटबॉल की तरह लात मार दो. They think they might think that it that way. So look at it like this way. You are a movie की बात करते हैं. Everybody is comfortable with the movie, correct? You are the producer, director, actor, script writer, and the hero of the movie. Or for in your case, you are the heroine of the movie, correct? Now there you have chosen a villain who is going to come and disturb your peace of mind for that movie to become hit. So you only chose the villain, correct? Soul जब when a soul comes to the body or when a soul takes a body and comes on earth, एक ब्लूप्रिंट लेके आता है ना. सोल का एक ब्लूप्रिंट होता है. ये कार्मिक लोग हैं जो जिनके साथ मेरा कार्मिक रिलेशनशिप है, यानी कि आप बोल रहे हो ये सब वो एक्टर्स हैं जिनके साथ मेरी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है. तो ये लोग आएंगे और मेरी लाइफ में आके जो भी करेंगे, अच्छा बुरा काम करेंगे, ताकि मेरी लाइफ में मेरे को वो लर्निंग्स मिलनी है जो मिल जाए. सोल का पर्पस क्या है? टू लर्न द कार्मिक लेसन. उसके लिए उसको कुछ अच्छे अच्छे सोल्स चाहिए जो उसके हिसाब से काम करेंगे, सो दैट द लर्निंग्स आर कंप्लीट. तो आपने उस इंसान को चूज किया. दैट मीन्स यू हैव चोजन दैट पर्सन, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ व्हेन दैट पर्सन कम्स and does something dash dash dash, you get upset because you have forgotten the script. आप जब आए, the soul moment it enters the body, the soul is in amnesia. Where is my friend Amit ji? We are all gods in amnesia. We forgot that we are gods. We forgot that we are a soul in a body. हम भूल गए. और जब वो आके तंग कर रहे हैं, हम कहते हैं हे भगवान ये क्या हो रहा है मेरे साथ, why me? Then you play the victim card. आप ही ने मूवी को सुपरहिट बनाने के लिए उनको चूज किया. Yes or no? Everybody okay with this? सर अभी Yes. अभी अभी ऐसा है कि ऐसा भी लाइक जैसे आप बोल रहे हो ना, वो भी मैं सोचती हूँ कि दे आर टीचिंग अस द पेशेंस, लाइक कि हाउ टू बी, के ठीक है, या तो इग्नोरिंग सीख लो, या तो बी पेशेंस, के दे आर लाइक दैट, इट्स देयर नेचर। और प्रकृति में कुछ गलत या सही तो है नहीं ना, जैसा है जो जैसा है वैसा है, तो उनको जैसा है वैसा रहने देते हैं, हम जैसे हैं वैसे रहने देते हैं, बट नॉट टू लेट एनीवन डिस्टर्ब यू। तो कभी-कभी मतलब है ना, Okay. वो भी एक रास्ता है ना सर? That is a good understanding, Nivedita ji. But yeah, first of all, let us acknowledge Nivedita ji. That's a good understanding. But इसका एक और better understanding हो सकता है, वो बताइए. Patience तो वो सिखाने के लिए आया है, number one. Very good point. है ना? वो patience सिखाने के लिए आया है, तो karmic lesson क्या है? The soul needs the experience of patience. Patience कब दिखाओगे? जब turbulence होगा, तो वो turbulence create कर रहा है, so that you learn the lesson of patience. That is perfect. Now, if you ignore that person, आपने word use किया ignore. अगर मैं इग्नोर करता हूँ किसी को, तो क्या होगा? कार्मिक अकाउंट तो वैसे का वैसे ही है, वो फिर मिलेंगे. हमको वो कार्मिक अकाउंट अगर क्लोज करना है, तो हमको क्या करना होगा? एक्सेप्ट. हेड ऑन हमको सामने उसे जाके हील करना होगा, लव पीस एंड जॉय की एनर्जी लानी होगी दोनों सोल्स के बीच में, तभी वो अकाउंट क्लोज होगा. है ना? वो चाहे हो गोल्डन बॉल सकता जो है है, पैसे के लिए तंग करें मेरे को, मेरे पैसे ले लें वापस नहीं दे रहे, या एक बिजनेस डीलिंग हो रही है मेरी उनके साथ और वो मेरे को ऑर्डर नहीं दे रहे. सब कुछ तो कर लिया, मैं कह रहा हूँ बच्चे की जान लेगा क्या, सब कुछ तो करके दे दिया, ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे? मैंने बिल्स दे दिए हैं, पेमेंट्स दे नहीं रहे हैं, करेक्ट.
So all these things are turbulence which are created by that soul. Why? Because they want to give me the lesson of patience. Patience तो आपने सीख लिया, लेकिन साथ साथ में उसको blessings देनी है. Okay. दोस्तों को blessings देना आसान है, दुश्मनों को blessings देना ज़्यादा ज़रूरी है. तो as a healer also, or even otherwise I will say, उनको माफ करो, जो हो गया, लव पीस एंड जॉय की एनर्जी भेजो, उस अकाउंट को हील करो, देन यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल. और फिर जब तक आप ये करोगे, हो सकता है वो पैसे दे ही दें, या हो सकता है वो शांत हो ही जाए. करेक्ट? वो भी समझ जाएंगे कि इनको तंग नहीं करना. वो भी तो तंग कर रहे हैं किसी वजह से ना. आपने उनको तंग किया ना पिछले जन्म में, मे बी. हाँ सर ना. तो वो वापस दे रहे हैं. और वो खुद अकाउंट भी तो तो क्लोज बीमार करो. है, कहीं कहीं ना कहीं खुद भी बीमार है ना. कहीं दैट वो इज बीमार वाई. है, दैट इज वाई. हाँ. वो बीमार है. पहले आप बीमार थे, आपने उनको बीमारी दिया, वो बीमारी वापस दे रहे हैं इंटरेस्ट के साथ. See, everything can be understood, and then we can have that acceptance and we can have that forgiveness very easily. तो उनको इग्नोर नहीं करना है. जो भी हमारी लाइफ में है, दे आर ऑल एंजल्स. दे हैव कम हियर टू टीच अस लेसन्स. कभी दोस्त बन के, कभी दुश्मन बन के. इट्स ओके. So the best thing to say is that I accept life the way it is, and the way it is not, come on, welcome. जिनको जो देना है दे दो, आई एम रेडी. आप जो मर्जी पैकेट दो, मेरी तरफ से आपको लव पीस एंड जॉय के पैकेट ही मिलेगा. So I radiate love, peace and joy to everybody in my life. And at some point of time, they will have no option but to send me that. Correct? Yes, sir. Thank you so much. Very good, Nivedita ji. Thank you very much for bringing it up. Yes. Anybody else who has any question? So we have covered 2 levels, huh? Acceptance and responsibility हमने cover किया. Yes, Vijay ji, go ahead. Just Shashi Dhar ji, just to summarize in other way, everything is perfect in nature. Vyakti vastu parasthiti will keep repeating till you learn. Absolutely. People will change. फेसेस चेंज हो जाएंगे, लेकिन कार्मिक लेसन नहीं सीखा तो वो वही बिहेवियर करेंगे जो आपको वो लेसन सिखाने के लिए जरूरी है. और वो नहीं करेंगे तो कोई और करेगा. वही मैं बोल रहा हूँ, फेसेस विल चेंज. एक जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा. अगर आपने लेसन नहीं सीखा तो वो लेसन्स रिपीट होंगे आपकी लाइफ में, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा. बिकॉज दैट्स हाउ यू हियर, यू नो. एक शादी ब्रेक हुआ या एक रिलेशनशिप ब्रेक हुई, फिर वो ऑन अ रिबाउंड दूसरी रिलेशनशिप में जाता है, वो भी वैसे ही, फिर वो छोड़ा, तीसरा. यू आर अट्रैक्टिंग सेम काइंड ऑफ पीपल इन योर लाइफ. वी आर अट्रैक्टिंग सेम काइंड ऑफ पीपल इन अवर लाइफ बिकॉज हमने कार्मिक लेसन सीखा ही नहीं. ना एक्सेप्टेंस सीखा, ना फॉरगिवनेस सीखा, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखी. तो जब तक ये नहीं सीखेंगे, लाइफ सिचुएशंस विल कीप ऑन रिपीटिंग. तो हम लाइफ को रेजिस्ट करेंगे. एंड रिमेंबर, व्हाट एवर वी रेजिस्ट will persist. ये यूनिवर्सल लॉ है. एंड वॉट एवर यू एक्सेप्ट विल डिसअपियर. अगर मैं, कोई एक इंसान है मेरी लाइफ में, मान लो, चलो आज अमित जी नहीं है तो लेस्ली. अगर मैं लेस्ली को रेजिस्ट कर रहा हूँ, वो मेरे से हमेशा गुस्सा करता, हमेशा मेरे से गुस्सा करता. अब मैं रेजिस्ट कर रहा हूँ तो उनका गुस्सा मेरे लिए परसिस्ट करेगा. अगर मैं एक्सेप्ट कर लूँ कि भाई लेस्ली का एक संस्कार है, सॉरी लेस्ली, आई एम गिविंग दिस कोट, बट या, हाँ, तो ये लेस्ली का संस्कार है, लेट मी एक्सेप्ट हिम कि वो एंगर के सिवा और कुछ नहीं दिखा सकता है मुझे. आई एक्सेप्ट यू द वे यू आर एंड द वे यू आर नॉट, एंड आई सेंड यू लव, पीस एंड जॉय. यू आर स्टिल माई फ्रेंड, यू बी एंग्री विथ मी, इट्स ओके, perfect. So it could be a nagging wife, it could be a demanding boss, it could be a argumentative neighbor, जो मर्जी ले लो आप. The moment I accept them, their behavior will start changing. क्यों? Resistance will cause persistence. Acceptance will cause disappearance. ये यूनिवर्सल लॉ है. तो nagging wife का nagging छुड़वाने के लिए वाइफ को accept करो the way she is and the way she is not, and keep loving her. ब्लेम नहीं करना है, राइट. एंड विथ टाइम जब कार्मिक अकाउंट ठीक होने लगेगा, इट विल गो. एंड वी ऑल हैव एक्सपीरियंस इट, यस और नो. एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव एक्सपीरियंस. बहुत कोशिश कर ली किसी को बदलने की, उनकी स्मोकिंग हैबिट, उनकी ड्रिंकिंग हैबिट, उनके नैगिंग, उनकी ब्लेमिंग, उनकी कंप्लेनिंग,
सब कुछ चलता रहा जब तक आप रोते पीटते रहे. जब आपने रोना बंद कर दिया, suddenly one day you found that, oh, he has given up his habit of smoking and drinking. Correct? So this my wife says for me, yeah. So habit nahi, that is gone. Otherwise, so it was, like constant tussle. नहीं जाना, मैं जाऊंगा, kind of stuff. तो resist करने से कोई चीज persist होनी ही है. Get the point? Yes. Leslie, you wanted to share something? No. And who raised the hand? किसी ने hand raise किया? Okay, maybe I thought so. That's fine. Right. So let's acknowledge everybody who shared. So we are looking into law of least effort, and we have covered two major points. One is acceptance, जिसमें हमने forgiveness को भी cover किया, and second, responsibility. Clear है ये दोनों? Let us look into the third aspect of how we can practice law of least effort. The third point which Deepak Chopra mentions is, now pay attention, this is a word which you may not have heard before if you have not read the book. It is called defenselessness. Defenselessness. What does it mean? What does it mean? Defend. हम किसी चीज को डिफेंड कब करते हैं? जब कोई हमको अटैक करता है तो हम उसको डिफेंड कर रहे हैं. तो डिफेंड ना करना, किसी भी चीज को डिफेंड ना करना. तो जब हम डिफेंड नहीं करेंगे किसी चीज को तो अटैक ऑटोमेटिकली विल डिसअपियर. एक्सेप्टेंस की जैसा हमने फॉर्मूला बताया. करेक्ट? नाउ व्हाट डज दिस डिफेंड मीन्स? This defenselessness is actually saying, I don't have to defend my point of view. That means some people are always saying, I am right, and they will go, पता नहीं किस लेवल पे चले जाएंगे to prove that I am right. है ना? Some people are dead right. They are right till they are dead. Okay. So they will remain right till they are dead. क्योंकि जब तक वो जी रहे हैं वो right ही रहेंगे. मैं हूँ, हाँ, I am right. तो I am right में ऑटोमेटिकली क्या होता है? You are wrong. तो हम बहुत सारी अपनी एनर्जीज को वेस्ट कर देते हैं ये प्रूव करने के लिए कि मैं सही हूँ, तुम गलत हो. तो what Deepak Chopra says is, in defenselessness, what it means is, I am right, you are also right. It is like the example of 6 and 9. Everybody knows that. अगर मैं एक बड़ा सा 6 एक टेबल पे लिख दूं तो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पे 6 है, दूसरी तरफ जो खड़ा है उसके लिए 9 है. मैं सही हूँ, यस. दूसरा सही है, यस. तो हमारे पर्सपेक्टिव, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू, अपने नजरिए से हम सही हैं. हर कोई अपने नजरिए से सही ही देख रहा है और सही कर्म ही कर रहा है उसी हिसाब से. बट हमारा नजरिया अलग हो सकता है. तो लाइक वी ऑफन से इन द कॉर्पोरेट्स, वी लेट अस एग्री टू डिसएग्री. सुना है? लेट अस एग्री टू डिसएग्री, यानी कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है, हम डिसएग्री करेंगे लेकिन हम उस बात पे एग्री कर लेते हैं कि हाँ हम डिसएग्री कर रहे हैं. सो देयर इज सम काइंड ऑफ ए कॉमन ग्राउंड विच यू रीच. क्लियर है? तो डिफेंसलेसनेस मीन्स आई एम नॉट जजिंग यू, एंड इट ऑल्सो डजंट मीन कि आई विल नॉट चेंज माई सेल्फ. मैं अपने बिलीव्स, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करने के लिए ओपन माइंडेड हूँ, और आप भी अपने बिलीफ और पर्सपेक्टिव को चेंज करने के लिए ओपन माइंडेड रहेंगे. दैट इज व्हाट आई कैन सजेस्ट. करेक्ट? एंड नाउ वी कैन हैव ए डिस्कशन. तो इंटरेक्शन में और डिस्कशन में अक्सर ये आता है पॉइंट कि आई डोंट हैव टू प्रूव माई सेल्फ राइट, आई एम राइट, यू आर ऑल्सो राइट. Now let us see how we can change our perspective, change our point of view to come to a common agreeable point. Clear? Defenselessness. Clear है ये point? Yeah, we need to more discussion. इसमें कहीं भी judgment नहीं है. What did you say? Defenselessness? Yeah. Deepak Chopra mentioned it as defenselessness. That means I don't have to defend my point of view. Okay. I don't have to defend my beliefs. I don't have to defend I am right. मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छे से सुन लिया, समझ लिया. एंड if there is a need, we can guide each other to improve. क्योंकि हम अपने इवोल्यूशन तो हो ही रही है ना, तो इम्प्रूवमेंट तो होनी ही है अपने बिलीफ्स में, अपने अंडरस्टैंडिंग में. अभी भी तो हम यही कर रहे हैं ना. वट एवर योर अंडरस्टैंडिंग इज,
we are aligning that with the spiritual law so that we get a better understanding. So we are all open to change. Change is a only constant, so we are all aligned with it. That is also universal law, by the way. Yes, परिवर्तन ही एक सृष्टि का नियम है. So defenselessness, is that clear to everybody? Yes. So let me check with the guests who have come now. So Rahil, you are there. Welcome, welcome. Long time, after a year or so you are coming. So let's welcome Rahil, Devesh, and S. Gaurav. Anything you would like to share? Anything you want to ask? Please go ahead. Then we move to the fourth point. Good evening, Shashi ji. Good evening, Devesh. Yes. Anything you want to share? Anything you want to ask? Yes, sir. मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, but the things are very clear Very good. about the responsibility and this defenselessness. Okay, very good. It And is first one very is clear. acceptance, huh? If you missed out. Yeah, first one is yes. First one is So I will. acceptance. Then we have responsibility. Acceptance में हमने forgiveness को भी cover किया. तो ये सब जी. steps हैं जिससे कि हम law of least effort को practice कर सकते हैं. जहां हमारी life में कोई struggle नहीं होगी, कोई प्रयास नहीं होगा, कठिन प्रयास नहीं होगा, सब अनायास होगा. अनायास is with minimum effort, effortless. Yes. I have one question in mind. Yes. Good. क्या the concept of defenselessness is applicable when we operate at the level of leadership in today's world? Defenselessness can be operative at the level of leadership. Yes, it can be operative at any aspect of your life. चाहे corporate world हो, personal life हो, कहीं भी हो. Because see, leadership में कैसे होगा? आप एक context दीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको. If you are dealing with corporate your world. सर corporate कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और जो सोसाइटी में जहाँ पर कट थ्रोट कॉम्पिटिशंस होते हैं and the peoples are jealous because of your positivity and truthness and all those things, the positive traits. तो वहाँ पर एक नेगेटिव ट्रेट्स भी डेवलप होते हैं आपके सराउंडिंग. तो इन दैट केस अगर हम डिफरेंसलेसनेस को लेके अगर आगे बढ़ते हैं तो दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू ड्राइव द पीपल्स फॉर द गुड ऑफ द सोसाइटी. Okay, so let me give that a simple example. उसमें मान लीजिए आपका कोई point of view है और आपने उनको सामने वाले को बताया, maybe your boss or maybe your junior, whatever be the situation, ठीक है? तो आपने अपना point of view उनके सामने रखा. I am right. Clear हो गया? I am right. Yes. After that, you are listening to the other person to understand their perspective without any judgment, without making them wrong. Okay, so I am listening to them to understand their point of view, understand their perspective without making them wrong, without any judgment. This is defenselessness. उसके बाद कॉमन ग्राउंड पे आके हम डिस्कस करेंगे और किसी एक पॉइंट पे आके एग्री कर सकते हैं. नहीं एग्री किए तो हम बोल सकते हैं ओके बॉस, आई एम नॉट कंप्लीटली एग्रीइंग विद व्हाट यू आर सेइंग, बट सिंस यू आर बॉस आई एक्सेप्ट इट. सिंपल. I gave you my point of view, but boss says no, you follow this, so you will follow that only, no? तो डिपेंड करेगा ना सिचुएशन को भी. थोड़ा सा कॉर्पोरेट में देखना पड़ेगा. अल्टीमेटली बॉस इज राइट, वो सबसे बड़ा रूल है. हाँ, बॉस इज ऑलवेज राइट एंड यू कैन से वाइफ इज आल्सो ऑलवेज राइट. उनके आगे कुछ नहीं चलती है. उनके आगे सारे यूनिवर्सल लॉज फेल हैं. Yeah, just on a humorous side, but yes, you can always use this law anywhere with any person in any situation. चाहे corporate हो, personal life हो, wife हो, boss हो, सबके साथ चलेगा. Junior हो, junior के साथ तो आप boss हो तब तो चल ही जाएगा. Yes. So Devesh, is that clear or you need more understanding? Yes, absolutely clear. Very good, very good. Let's acknowledge Devesh. He has brought in aspect of corporate life there. Thank you, everybody. Anybody else who has any kind of question? What is not clear now? And always look into any universal law in collaboration or in symphony or in, you can say, in unison with all other laws. तो इसमें law of your potentiality को भी use करना है, law of giving को भी करना है, law of karma को भी करना है और फिर law of least effort को करना है. ये हम अलग अलग समझ रहे हैं, लेकिन ultimately all these laws are all interwoven into each other. अलग से कोई law नहीं चल रहा है.
ये सब एक साथ चलेगा. Yes. All right, that brings us to the fourth point. Fourth point, what Deepak Chopra says is follow the intuition. Follow your intuition. That is the best way, because you're not using your logical mind. You are not using your subconscious mind ke thoughts and emotions. You are taking a download from the divine wisdom. So you are connecting with the divine, invoking the divine within. You are connecting with the divine wisdom, and whatever comes to you as intuition, you are following that. तो उसमें कहीं कोई struggle नहीं होगा. It will be all blissful. Like Shaluji's experience, it is all blissful. You will be full of delight, joy, and it will be effortless. कई बार होता है ना इंट्यूशन, पता नहीं क्यों, कैसे, किसने बताया, क्या नहीं बताया, कहाँ से आया पता नहीं, लेकिन आपको मालूम है ये सही है. This is what I need to do. That is the divine wisdom telling you, you are right, go ahead. So there is no logic why you are thinking, कहाँ से आया ये thought पता नहीं, but you know this is the right thing to do. Like that. So follow your intuition. So intuition everybody knows. अगर आपने चक्रास के बारे में सुना है थोड़ा सा, तो it is your divine wisdom which is at the third eye chakra. तो आपके divine wisdom के साथ intuition आती है when you practice maybe simple techniques of meditation, pranayam, sit with yourself in silence, you will get the divine wisdom. अगर ये सब नहीं भी करते हो तो सबसे आसान तरीका, सोने से पहले आप कोई सवाल पूछ के देखो, और सुबह उठने से पहले आपके दिमाग में कोई नया आइडिया आया तो उसके बारे में फॉर द सॉल्यूशन. how many of you have tried this? इसको बोलते हैं ना स्लीप ओवर इट, बोलते हैं ना कई बार हम, कोई प्रॉब्लम होती है वैसे स्लीप ओवर इट. आइडिया क्या है? यू आस्क फॉर डिवाइन हेल्प एट नाइट एंड गो टू स्लीप. मॉर्निंग में आपको थॉट अपने आप आ जाता है. कभी कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया? नहीं किया तो करके देखिए. इट इज द डिवाइन विजडम गिविंग यू द इंट्यूशन. If you are caught in a tough situation, just say, oh God, give me the guidance to take the right action by tomorrow. Mind को बता दो, आपका subconscious mind is always in alignment with the universal mind. Yes or no? Your subconscious Yes, mind is yes. always aligned with the universal mind. Universal mind is the mind of the cosmic intelligence. तो उस सवाल का जवाब पूरे ब्रह्मांड में घूमता हुआ जाएगा, सवाल का जवाब मिल जाएगा, और वो आपको एक इंट्यूशन ऐसे डिवाइन स्पार्क इट विल कम टू यू. ये सबसे आसान. बट हाँ, जो प्राणायाम, मेडिटेशन और बाकी स्पिरिचुअल साधना में हैं, उनको रात भर सोने की ज़रूरत नहीं है. आप सिंपली पूछ लीजिए, आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा. यू सिट इन मेडिटेशन फॉर 5 minutes and ask that question. When you, by the time you get out of the meditation, you will get that answer. ये कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा टफ है, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए इसमें, पर मिलता है. When you are connected with the divine wisdom, the intuition comes to you. Yes, there are many people who live their whole day by only the divine intuition. Yes, many people, they get up in the morning and they don't know. मेरे को नहीं मालूम मैं कल मेरा दिन कैसे जाएगा, और मुझे इतना मालूम है मैं सुबह उठूंगा, 3-4 घंटे अपने योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम करूंगा, and then whatever I need to do, it will open up, it will show up, and that's what I do. बहुत लोग हैं ऐसे. I of course do it only for specific thing, but there are many people, the enlightened ones, उनका तो every moment they are getting the divine wisdom. They only follow the divine will. थोड़ा टॉपिक से बाहर जा रहे हैं, but since we are talking on that topic, so I thought I will just share. Yes, so everybody connected. Divine wisdom, intuition is very very powerful. हाँ विजय जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? ये मेरे ऊपर से निकल गया. चलो कोई बात नहीं. क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस ये इंट्यूशन का कंसेप्ट, हेलो, हाँ इंट्यूशन का कंसेप्ट मेरे को नहीं है. ओके. Because for me, what I think is the subconscious takes over on whatever you are thinking or trying to do, because the subconscious is trained in a manner over the years and over the janmas, etc., etc. Yes. So the subconscious will force you to decide what is right or wrong. सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न्स हैं, आपके रिपीटेटिव पैटर्न्स हैं, हैबिचुअल पैटर्न्स हैं, करेक्ट.
दे कैन गिव यू ए थॉट एंड यू कैन इजिली नो व्हाट इज कमिंग फ्रॉम द सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे आपको मालूम होगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का एक ही पर्पस है। कॉन्शियस माइंड के तो बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं, है ना। माई गोल ऑफ लाइफ, माई पर्पस ऑफ लाइफ, ऑल दिस इज कॉन्शियस माइंड का ड्रामा बोलता हूँ मैं। हाँ, ये कॉन्शियस माइंड के ड्रामा है। मेरा पर्पस क्या है, मेरे गोल क्या हैं। सबकॉन्शियस माइंड का एक ही पर्पस है, क्या है? एनीबॉडी? सबकॉन्शियस माइंड का एक ही पर्पस है, और कोई पर्पस है ही नहीं। और सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, ये हर जीव के लिए है। सर्वाइवल। हाँ, टू कीप यू अलाइव। इस बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स को जिंदा रखना सबकॉन्शियस माइंड का पहला काम यही है। अभी आप रात को सोते हो और वो आपका हार्ट बीट चलाता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम चलाता है। हम कुछ भी नहीं करते अपनी बॉडी का। 99% of the work of the body is done by the subconscious mind automatically. Yes or no? Do we control our breathing, our digestion, our blood circulation? No, everything is done by the subconscious mind. Why? It is under the guidance of the universal law. Sorry, universal intelligence, not law. Correct? So you need to understand it this way. Conscious mind and subconscious mind, ये दो अलग-अलग parts हैं mind के. No, Okay? but tell me one thing, subconscious mind जो है, is it not getting programmed because of Yes. the experiences that Yes. that one has? But you can reprogram it. हम रिप्रोग्राम क्या करते हैं? सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स को हटाते हैं और डिवाइन एनर्जी के साथ हम उसको रिप्रोग्राम करते हैं। एनएलपी में किया ना हमने, स्पिरिचुअल एनएलपी में किया था। तो डिवाइन एनर्जी से हम स्पिरिचुअल एनएलपी से क्या सीख रहे हैं? सबकॉन्शियस माइंड को कैसे हमने रिप्रोग्राम करना है। तो पुराने पैटर्न्स जो बेकार के हैं उसको हटा दिए, पावरफुल पैटर्न्स जो एम्पावरिंग है उसको डाल दिए। तो करेक्ट? इंट्यूशन कहाँ से आता है? इंट्यूशन कम्स व्हेन सी आपका विजडम क्या है? विजडम कहाँ से आता है बताइए? बुद्धि जो है आपकी। I thought the wisdom comes through the subconscious. विजडम डजंट कम फ्रॉम द सबकॉन्शियस में सिर्फ हैबिचुअल पैटर्न्स हैं। Okay. उसमें Yeah, it जब doesn't know what डिविनिटी is right and जागेगी, wrong, right? उसमें जब डिविनिटी जागेगी, करेक्ट, देन इट बिकम्स इंट्यूशन। बुद्धि में, बुद्धि योग बोलते हैं ना हम लोग, बुद्धि योग में है। किसके योग में है? डिवाइन के योग में है ना। द इंटेलिजेंस, बुद्धि जो है, इंटेलेक्ट इज अलाइंड विद द डिवाइन विजडम। देन द बुद्धि में राग द्वेष हटके विवेक और वैराग्य जागते हैं। विच मीन बेसिकली नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो डिवाइन से कनेक्टेड नहीं है, उनके दिमाग में क्या होता है? राइट, रॉन्ग, गुड, बैड, जजमेंट, इवैल्यूएशन, ये होता है इंटेलेक्ट में। यस, एवरीबडी क्लियर? सिंपल बात है, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता। मन में हमारे क्या है? सी ईगो, इमोशन एंड इंटेलेक्ट, अंडरस्टैंड इट दिस वे। मन, बुद्धि और अहंकार अगर हम देखें तो मन क्या है? इमोशन है। इंटेलेक्ट क्या है? बुद्धि है। ईगो अहंकार है। क्लियर है यहाँ तक? एवरीबडी ओके विद दिस? ईगो इज अहंकार, इमोशन इज मन, जिसको मन बोलते हैं, वो इमोशन है। इंटेलेक्ट है बुद्धि। इंटेलेक्ट में क्या होता है नॉर्मली? राग द्वेष, विच मीन्स व्हाट? प्लेजर एंड पेन लगा लो, या एवर्जन एंड अट्रैक्शन लगा लो, गुड एंड बैड, जजमेंट, इवैल्यूएशन, नॉर्मल इंटेलेक्ट में ये रहता है। बट देन बुद्धि जब योग में होती है, यानी कि बुद्धि जब डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो जाती है, तब क्या होता है? इसमें विजडम आती है। वो विजडम एक्टिवेट होती है एंड इंट्यूशन के फॉर्म में आपके थॉट्स आते हैं। नाउ दीज थॉट्स आर कमिंग फ्रॉम द डिवाइन, दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम द सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड से तो सिर्फ आपके सबकॉन्शियस माइंड से तो सिर्फ फाइट और फ्लाइट आएगा। समझ रहे हैं? उस स्टेज पे सब लोग होते हैं बिकॉज नहीं, सब लोग नहीं होते। जो कनेक्टेड होते हैं, जो एवेकेंड हैं, जो स्लीप वॉकिंग हैं, उनके लिए नहीं होगा ये। Maybe that's why I'm missing it. Okay. No, you are not missing. You have got it. Only thing is you are not practiced it. विजय जी, आप ऐसे मत बोलिए। आपने वैदिक हीलिंग किया है, आपने एनएलपी किया हुआ है, यू आर वेरी वेल कनेक्टेड। ओनली थिंग इज यू हैव नॉट प्रैक्टिसिंग इट। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, मेडिटेशन, थोड़ा सा बैठिए, अपने आप डिवाइन विजडम आएगी ही आएगी। बाकी सब छोड़ दीजिए। आप रात को एक सवाल, मेरे कहने से रात को एक सवाल पूछिए डिवाइन से, गाइडेंस पूछिए, और देखिए एक दिन नहीं तो दूसरे दिन सुबह सुबह वो मिल जाएगा। पहली बार कर रहे हैं तो हो सकता है 2 दिन मिले, बाकी
धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, रात को बोलेंगे, सुबह मिल जाएगा। और जो मेडिटेशन और प्राणायाम कर रहे हैं वो मेडिटेशन में जाने से पहले पूछें और फिर 5-10 मिनट मेडिटेशन करें, मेडिटेशन से उठेंगे तो जवाब मिल जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। यस, और बहुत लोगों का होगा, निवेदिता जी का भी होगा, एंड आई थिंक लेस्ली का भी होगा, बिकॉज दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग दिस very very powerfully. Yes, so you want to share something, Leslie or Nivedita ji, your experience about intuition? अमित जी आज थोड़े से बिजी हैं, वरना वो बताते डाउनलोड कैसे मिलता है. He is very what do you say, vociferous about his intuition. Third chakra is the chakra for your divine wisdom and intuition. Yes, Leslie, anything you want to add? No, I think विजय सर ने जो क्वेश्चन पूछा है वो मेरा भी कहीं ना कहीं से आ रहा था, because the moment you said subconscious mind and universal mind aligned होता है तो it immediately मेरा बल्ब जाग गया था, क्योंकि we are continuously working on a subconscious mind के उसके patterns निकालने के लिए. तो I was very keenly listening to Vijay sir and your conversation. तो कहीं ना कहीं मैं भी उसमें linked up हूँ. So since you are in the NLP program, you will be able to understand it better. क्योंकि उन पैटर्न्स को धोने के लिए डिवाइन शक्ति ही चाहिए, इसीलिए स्पिरिचुअल एनएलपी वर्क्स मच बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ रीप्रोग्रामिंग द सबकॉन्शियस माइंड. बाकी सारे टेक्निक एक तरफ और स्पिरिचुअल एनएलपी एक तरफ, उसकी पावर बहुत ज़्यादा है. पैटर्न्स बड़ी जल्दी हट जाते हैं एंड डिवाइन इंट्यूशन बड़ी जल्दी इन्वोक होता है. यस, यू विल एक्सपीरियंस इट, डोंट वरी. Another 6 weeks. Let's acknowledge Leslie and Vijay ji. Very good. Yes, Nivedita ji, anything you want to share? सर जैसे आपने बोला ना कि while meditating, yes, you do get answers. Yes, perfect. That is what is intuition. बहुत सिंपल है. तो पहले बहुत टफ सवाल मत पूछिएगा विजय जी, पहले थोड़े आसान वाले सवाल पूछिएगा ताकि आसानी से जवाब मिल जाए. बाद में टफ वाले प्रॉब्लम ये है पूछ कि मेरे पास कोई सवाल ही नहीं है, फिर आपको इंट्यूशन कहाँ से मिलेगा? आप बोल रहे हैं मैंने सिक्सर नहीं मारा, आप प्लेग्राउंड में जा ही नहीं रहे हो, सिक्सर कहाँ से मारोगे? उसके लिए बैट्समैन को पवेलियन में हट के ग्राउंड में आना पड़ेगा, एक बॉलर को फेस करना पड़ेगा, फिर आप सिक्सर मारोगे. आपके पास सारी टेक्निक है सिक्सर मारने की, लेकिन आप खेलो तो सही. ठीक है जी. ओके, लेट्स एक्नॉलेज विजय जी. दैट्स वेरी वेरी पावरफुल एक्चुअली and very practical question, because many people have this question like Leslie was sharing. Yes, now we have reached the scheduled time, so let me check with a few people who have not said anything. So Rahil, anything you want to share? How was the session for you? क्या सीख के जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो इस प्रोग्राम से? The session was good. After a long I joined, so let's continue. Then I will share my thoughts. Okay, very good. Let's acknowledge Rahil. He's shown tremendous commitment. I had a conversation with him and he is here today. And he is logged in from Dubai, right? So Rahil, अभी वहाँ का क्या टाइम हो रहा है रात का? It's 8:30 now. अच्छा, हमसे बाद में. Okay. Yeah. I was stuck in the traffic. That's why late. That's okay. Got it. So it's a good time. 8:30 is a good time. Yep. Yeah. All right. Let's check with somebody else. So Devesh ji, Amit Verma ji, and Shalu ji. Anything that you want to share before? What are you taking away from the session? And then we will close the session. Amit ji, I know he's a little tied up today. So Amit Verma ji. Yeah, I can only say, Shashi ji, that for me, as I said, it's the first session. तो जो आपने themes और जो aspects raise कर रहे हो, मैं तो यही surprised हूँ कि हम कभी इन aspects से reflect ही नहीं करते थे. So before acceptance, before defenselessness, before ownership, is recognition, is realizing कि ये सब पहलू हैं, ये सब तरीके हैं, ये सब aspects हैं life के, on which you want to reflect. And for me, that's the starting point of where I joined this session for the first time today. Very good. Let's acknowledge Amit Verma ji. Very, very authentic sharing. So now you know it. So first thing, always, the first step is always the knowledge of the theory, you can say. Now you know the theory, now you can start practicing it. Without knowing, how can you practice? है ना? तो अमित वर्मा जी बहुत बढ़िया. आप आइए यहाँ पे, हर सेशन में हम कोई ना कोई ज्ञान आपको मिलेगा. इनफैक्ट द अर्लियर recordings are available on the YouTube. You can check that with Vijay ji. And we will also add you in our group if you are keen, so that you are in touch with us. And every Wednesday you can join us
on these sessions, and you can get your wisdom bites for your spiritual growth. Let's acknowledge Amit ji. Very good. Thank you. Yes, Devesh ji, go ahead. Sir, my key takeaway of today's session is the responsibility is response plus ability, which means ability to use my response instead of reaction. Very good. And Very the good. and the second thing which I got, our subconscious mind and the universal consciousness are always connected. Perfect. So in order to get the direction, you just have to connect with the universal consciousness. That's it. Very good. बहुत बढ़िया. Thank you. Great. Thank you. Thank you. Thank you. Welcome, Devesh ji. You should also be attending the Wednesday sessions very regularly. We have these sessions every week. Yes. Shalu ji, anything for you? What are you taking away from the session? Shalu ji, are you there? Same thing Yes. the same thing which I said before. I'm able to recognize the things, they are there, but listening to you, I'm able to connect it more. Okay. Okay. Good. So we have also outlined not only the theory, we have also seen the 4 steps which you can practice. So next week, when we come, this whole week, you can use the whole week as an opportunity to practice these steps and see which one comes to you very easily and which one are you finding it tough. Then we can see and share more about the insights so that you can practice it and make it a part of your life. Yes. All right. So with this, we come to the end of the session. Thank you very much for your participation. Enjoy a great day. Enjoy a great week. And a very, very happy Diwali. Next week, we may not have the session because of the Diwali festival. So Shubh Deepavali. Happy Diwali to everybody. Enjoy. We will join next Wednesday again. And till then, Aham Brahmasmi. Enjoy. Take care. All the best. Thank you, Shashi sir, everybody, Bye. and Bye. everybody also. Bye. Bye. And Good happy night. Diwali in advance. Bye. Happy Diwali. Happy Diwali.